भगवते वासवाय पंचमध्यायु वासो नंदा संस्पन्ने जात लारो मावनाव विप्राण देव ज्ञान नारु श्रीलंकृतो बाजे श्मशान जारकमात्मजिकारामसि विवत् पितृय वर्षनुधा देवनाम प्रीते प्रारादेव्य समनुकृतिराजिन देशु दत्नको कुसुमरस्याजा काय नसान संस्याभ्याम संस्कार श्री सजी सरकार विद्या समंगलाच गिरोविप्राण सुतमाग्रबंदिनो कालकांतुनेति वै दंडु भयो मोह ब्रजो सम्मृत संसक्त द्वारकाजीर द्वारजीता ग्रंथरोचित ध्वज पटाका अनुपने गावो विषा जैतरा हरिद्रा तैलुजा विद्वार कृष्णकांत मालिन मारह भाज कंजुट केशना गोपा समुद्राजन नानो प्रियस्न गोप्याचा विदमुदिता सुराया वर्ण आत्मानो व्यंचाक्रार वस्त्रनादि नवकुंकुम किंजलकम मुखपंजलकम बलिनान तरिति यो जग्नु पिछलाचुलम बेचराचुला गोप्या सुमि सुमनि मणिकंठाचरामि पथि सच्चाचुतम गोप्या सुम सखिगुण निष्ठकंठ्या चित्रंबरापथि शिखाच्युत माल्यवर्षा नंदालयं शोभया वृति वीरेजु लोककुंडल अपयोधराधर शोभा आदिष्टो आशीषो शोप्रंजरान चरण गीत बालकी हरिद्राचूल जैत्राखी संतन्त्यो अजन मुज्जगु अवाजंजीवितानि भारतानि मोत्सव्य कृष्णे विश्वसुजे नद्ये नंदे शुभजमागते गोपा परश्रमीत्वा तदेख्या किरमि भुवासंत्यज्य विलिम्पन्तु नवनीतहिताचखिपो नंदो महामनादिष्टो भासो अलंकृतागम सुतमागमजेन्यो परिजीविना तेस्तै कामैदैनाथ्योदथोरितमरुदय विष्णुर्मायाधायो सुपुत्रयो दासो रोहिणीसमावागा नन्दगोपाभिनन्दिता विरसद्दिव्याकाशारुमणिजा प्रभो तत्वारद्युन्मेषुप्रजा सर्वसमृता हरे निवासगुणै परमा रमाक्रियावन्निपो गोपान् गोकुल रख्यायां निरुद्ध्या मथुराङ्गतो नन्दोकंसिषुत्पार्शिक्यां करं दातुं कुरुद्भः वसुदेवोपक्रम्यो जातं भ्रातरं समगातुं जातं दन्तविभाकुरं नैकेषु तरभूतं वसनं तं दिशा शौचायो कंसो प्रणीतो पीतोपि राजभ्यां सम्भजे विहले पूजितो सुखमासेन प्रेषयन्वार्चभक्ति सिद्ध्य आत्मरामपि सम्पते दिशाभ्रातपुरुषो इदानीमिते प्रजाशयानि विधिसिद्धि समागता दिशा संसारचक्रेऽस्मिन् वर्धमानो पुनर्भूम् उपलभ्यो वानिति दुर्लभं प्रियदर्शनं नैकत्रो प्रियसंवादो निशितं चित्रमार्जनं ओघेन विवादुं प्लवानां शोटपादवा कचित् प्रसन्निर्भ्यं त्वं बाजतुभ्यद्वनं मधुनां तत्रासे त्वं श्रीविदं भ्रातर्ममो कंसो कचिन्मात्रो सुतर्भजे तातं पुरुषमन्नानो भवद्भ्यामुपलक्षित मुपालित पुंसस्ति वर्गो बीतो सूरितो धनुभावनोति सूर्य समानोति वर्गो जो कल्पते नन्दोवासो अवते देवी की पुत्रा कंसेन भावो हटाय काव्यसा कन्या सापी दिवंगता नूनं पृषदो वासितमोज्जनो अतिस्वरूपानो संवीपीरुनो मुद्यति शिवशिवासो करो वै वार्षो सत्यो दत्युवार सत्यवान गोशूनियं गुड्डित्यो सिंचं पटा गोकुले शिवासो दीनदादेव गोपा प्रवचरे सोरुनाजीवनो वीरादिव्याजं गोकुलम् इति भावति महापुराणे वैयासिकां दशमस्कन्धे नंद वसुदेव संगम नाम पंचमध्याय समधारागुण कृष्णदान बल हरि बोल हरि बोल। Sri Krishna Govinda
नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उनो भगवते वासवाय स्वस्थज्ञाय शिवशिवास नरपति प्रवृत्तं सूर्यनाम शिवावसी हन जगामो सर्वोधि संगीत कंसेन वैता गोरा पुतना लंघिते शिवचारान मणि गणपति वासना उत सुगामिनी रक्षोदानवी कुर्वन्ति सातां भक्तुं जिरोये काशी श्री निरपुतना निर्गुंजासु माया प्रावेश क्रमसा कामसारिणे ते केशवंडाति समलिका ब्रह्मी चंब वसुमा सुवासं कंपित कर्णभूषण लसत् कुंडलमा कुंडलमानिना मानिनां बलगूट मिश्रभंगं धनुनो हरन्ति दीनं प्रचुगताम् अमंगलूते स्वरूपिणीं गोप्राश्रियं दशवार्य बालकतरग्रह विशुन्नति सुन्दरिशया नन्दगृहेजा अंतबालं ग्रहसवन्वितेरुचिं तलोषि वासे विरुवदेन बालवशी सरासनं मुनिमिल्लमिते स्वनन्तपुरारकं तथोरगं सुब्रमसि जुषि तां दीक्षामितारं भिक्षमाण गोपरासीत् बदसियोदस्विषया चोपजिति नेति निरीक्षमाण जननी झटति स्तम् तमिस्मिन् तस्मिन् दुरादविषयं घोरसमाङ्कराशि सर्वदावागारङ्कराभ्यां भगवान् स्वप्रीता तर्परि समं घोरसमन्निपिबत् सामुञ्चो मुञ्चालवितप्रवासि निर्विदिता ब्रह्मणि विवृणेति चरणौ व्याख्याखिपनि करोद रोद तैषा शनिना पुरुजगत्साधुवशी गौरी सुधादो रसादि स्वप्रेनाधिर्पीतु कीटौ भज निपसङ्कया निशाचराग्नि भेदासे वसुदेवा के शांतरणौ वापि प्रसार्यवृष्टि निरूपावने वज्राटो ततो इव पतन्निपः परमाणुपि दद्यासि बुद्ध्यातरण्या शून्यमासो राजेन्द्रो वदन्ति तद्भुतम् ईशमानो व्रजे सङ्किरिकगन्धर्वं गण्डकैर्लरुद्रं पकृन्नमरमुषितम् अन्धकूपपराराग्रं पुलिनारुवायुधं वदसीतु त्वद्वाग्निस्फुरोऽपि उज्ज्वलाम् सनसतु देतुगिहु गोपा गोप्यो कलेवरं पूर्वनिर्तनि सन्निध भिन्नाधित कर्णमस्तका बालस्वतेशो उर्से क्रियसी जा गोप्या गोपसन्नं तंजगृहो समाजा दशरारुहिनाशं बालेषु सर्वतो दशोटा रोहिणीताय समाश्वरेख्यां कर्वी सैम्यग्रादिभिः गोमतेन स्नापयिता गोपारेख्या शूरो समुद्रद्वारस्य सेनाभिः गोसंस्कृतपार्श्वाङ्गेषु कबलेषु ऐसा समर्थो बालेषु बीन्याकुर्वत अभ्यङ्गदोषो मणिमांसेषु रथेषु रङ्गेषु वाचसंह्यासु हरिकेशवदुष्करङ्गेषु नेषु देवाविषु मुखं करोति मुखं अमूर्खमु ईश्वरकम् सक्रायुधो कृष्णासु हरिदशु पंचारस्य पुराणवो परामिहनिन्सु केशु कोणेषु गुरुडायो उपार्युपरायो कीतो हरिधर पुरुषो समन्ता ध्याने शिकेशं पुनर्विनानामितं तेजा सिद्धिदीपादि चित्तं योगेश्वरान्तकं विष्णुगर्भो इति बुद्धिमान् भगवान् परो कृजन्तं पा गोविन्दो शयानं पाठो माधव ब्रजन्त इव वैकुण्ठो आसीनं त्वां श्यावतीं मुञ्जानुजैवो पाठो सर्वो ग्रहभयङ्कर दाक्षिणो जाटाविनसु कुष्माण्डा दर्वार्को भूतप्रियत विशाचांसो हरेक्षरेख्यो विनायका कोटिबले नाट्य पुराटवासो उन्मादादिरीत पाशा देहो प्राणिध्यात्मनो स्वप्ने स्वामोत्पाटा वृन्दाबालखन्दे सर्वे निस्मृति विष्णुर्नामो ग्रहाणे वीरव यशुवासो इति प्रणबद्धा गोपीभिः रेख्यनाशपायित सनमाता सन्न्यसामयाब्जं तावन्मात्रमण्डादयो गोपा मथुराया ब्रजम्बनी विलोक्यो पूतनादेशामो भूरिरमयीश्वरा नूनं भर्तसी संजातो जोगेश्वर का समा सोएव दिष्टोदिपाठो जरा आनकचन्द्रभिः कलेवरं स्वपरश्वस्तां तेतद्वसु दूरे क्षत्रवार्षो नूनं काष्ठविंशतं दजमानसु देशु द्रमानकुरुषु उदितोग्रनानसु कुरुपाप्तना पूतनलोकनापनि लक्षिणादिविलास्यासि स्तनं सन्तापो सद्गतिं किं पुनः सद्या भक्त्या कृष्णा परमात्मने दर्शन प्रियतमं पद्भ्यामृतां वैभ्यां बन्धभ्यां लोकिविन्दवा अङ्गं वैश्वसमाक्रम्यो प्रवाणीयस्तनं
दार्धन्यापितां शरणाभिजन्यं कृष्णभूतवाणी जङ्कीमुदक्षेत्रात्र पयांसु सेवासु पुरुषयावसलं भावादिपुत्रो कविलारिसुता तासां कृष्णे पोकुर्वतीं त्रिखिं पुनः कृपन्ते राजा सङ्खे ज्ञानसङ्गत कर्तुमैषु सर्वभ्यामुग्धाय प्रकुशो गीमिदं कूटो ये वाटे धमन्तो ब्रजमाविश ते तत्र वनिता गोपी पुतना गमनकारणसूता तन्निधनं स्वस्ति शेषारसुस्मिता नन्दसुपुत्रायो प्रेतस्या अप्रेत्यागतमुदार्ढि मुद्नाग्राय परमाङ्गूटं लेभि कुरुद्भः सूयेतर्पुतनामोख्यं कृष्णशार्भगमद्भुतं शृणुयात् सद्यामृता गोविन्दी लभते रतिम् इति श्रीमद्भागवतमहापुराणपरमयासिक्यां दशमस्कन्धे स्वसध्याय श्रीमद्राघवेन्द्र कृष्णकृष्णानन्द बोल हरि बोल हरि बोल। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथो सप्तमोऽध्याय राजवाद्येनावतारणो भवान् ईश्वरकरोति ज्ञानो न ज्ञाने च नभो तत्सन्निपो जीवराशो सत्यञ्जो सुषमायिते भक्तो सुपरमापुरुषक्षं तरीपो पार्वतीशमनिशम् अथान्यप्येषु त्वकाशितमानसो लोकमाश्चर्य तच्चिरामाशुवासो कदाचिदौ राजकुले पृथ्व्यन्तर्वजातमिकेभिनं वीराधिगते विशिखौ शृणोत्सरविंशति नंदेशो पत्नी कृतमज्जानतिकं विप्रे कृतस्वस्थानं स्वपूजिते अन्यज्यावासा स्वव्यावृत्तिनोऽपि सञ्जात निग्रामय दर्शने उत्थाननकोऽसिमनस्सिनि समागतान् पूजयन्ति बलुवशो नैवाश्नोरि तद्वीरैरुचिरैरुद्रन्त्रैश्चरणाम्बुजखिपत् अहो अवश्यानऋषिशोरनुकल्पदामाश्रं बीजवृतो विडसनादधार्कं व्यतजनानेभवम् देशास्वदा प्रमुखर्वश्योत्थानके कर्मनिजास्मानिक नन्दादे शत्रुव्यञ्जा कथं वयं वै सङ्गतं विभजयम् इति ब्रुवानस्तोरीविदजना समन्तादपरि ब्रूयाद्वर्तव ऊषुरभ्यां गोपान् गोपीषु गोपिका वृतानेन पादेन खिलमेतन्नो सम्पय नोते सतिर्ये गोपा बालजातमृतप्रमेयं बालं तेषु बालकेषु नोते विदु रन्तं सुतवामादस्वदा घ्रमातरा कृतमस्वस्थानं विप्रैषुतैस्तनमपायत् पूर्वर्षानोपितं गोपीराजरखिलं विप्रा हुतमग्नायन्तर्षुदादिभिः अजमोपि मेयन सुयाद्भावा विषायुजुगोपितन्वते सांसतमासीनं विफलाकृता इति बालकमादाय साम्राज्यशास्त्रेण जलैः पवित्रौ जलैः पीते दीपलैः वासे च स्वशानुगोपो समायति भूतासालग्निजेभ्यो प्रादान्वदागुणं गावश्रवणपीठो वाश्रवलुफलात्मजाभिप्रादात् समुचो विप्रामन्त्रिविरोधब्दादेवान्मेखलाभिजाकरश्रो एकदा मारोपिमातिं पान्ति वासिति ब्रह्माणं श्रुतिभिरुषा नोषेति परिकूटवत् भूमौ निराय गोपी विस्मृता भारपीठा महापुरुष महाचाद्यौ घटा महाराजो घटयामासु कर्मसु दैत्य नाम्नातिनिवृता कंसार विजयी विजय चक्रवाठ गुरुवेन दासीर्बरकं गोकुलं सर्वमनीषं सबरसि विष्णु ईश्वरं सोमाघोरे शब्देन पैचोदिशन् मूर्धवशं गोष्ठं रसात्मसावं सूतं सुदानावसंज्वानान्तरि प्रभु नाभिसंकंसनामाशु पारस पीवमोहित त्रिनावर्तोऽयं सर्वरामवसुता इति खरवपनानासुरे शूले यदा बलजामटा अजिगुरकरुणाजत्वा परिदामतिकरीश्वरजरागौ नृतामापन्न तत्र गोपा विषमुखन्या रुदिदुर्मदानन्दसूतोपवनो उदारपांशुर्वर्षवेगे दिनावर्त शान्तनवो यथारूपरयोगिनं कृष्णं नावाशुगन्तुं न शक्नो विदारवन् तमस्मानं मन्यमानं आत्मानं गुरुमेवं गले गीतो प्रणेशो न शक्नो क्याद्भुवं गलग्रहणिशेतो लोके आनरितोचरम् अद्भक्तावारो नवशवावलो स्वर्ब्रजे तमन्तरिख्यापतितां शिलायां विश्ववरविदकरालं पूर्वं यथा विश्लेनुभ्योस्त्यादधिश्वसमेता
प्रादायो माद्राभिलभ्यो विस्मिताग्रंशो तेषुं परिलम्बमानं तं सुषमतं पुरुषमादियं व्यासामृति मुखात् प्रमुखं गोप्यासो गोपाकीर्णमुख्या लब्धा प्राप्नुरतिवो मोदयन् अहो बता त्वमेव रक्षसाबालो निवृत्तिर्यमुदिर्जगात् पुनः हिंस्रो सोपानेनो विहिंसतो खलो साधु तमेन्द्रो भयात् विमुच्यते किं न सत्पुरुषादो किं पूतेर्नर्मदिर्भूतभ्यत्यारजत्पादस्वेपनिर्वपालक्योदिष्टा स्वयंभू पंडिता निर्देशतानि भूषणनुगोपाभिर्वनिवासैव भूयो मानसा च स्फीता एकदर्भाप्यस्य स्वयं मानवानि सश्रुत्यपरामश्रेष्ठन्तिहासिता पीठप्राणि जननी चापैशूरिराजमुखं लालति राजा समुद्रशेदं खंडोदशि ज्योतिषा विघ्नाद सुजन्तुरमिषु दीपानागांसराविषु भूतानि जास्त्रमपि साभिक्षो विश्वं संसार विविध सन्मिलोमवासी नेत्रे आशिषुनिष्ठिता इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे परमयासिक्यां दशमस्कन्धे त्रीनावर्तवधो नामो सप्तमोऽध्यायो श्रीमद्राधा गोविंद कृष्ण प्रचानंद बल हरि बोल हरि बोल। होते वासो आनुष गर्भवासो अयं हिरोइनी पुत्रो रमयन सुरिदो गणे ऐख्याचाय राम रामो बलाधिक्या बलमिदो जो नाम बलभिद्वार संकर्षणा सवितो आसन बनस्यो देशो विनितो जुगंतनु शुक्लो रक्तकितो पीतो इदानीं कृष्णांगत प्रागयं वसुदेवेषु संचिता सतवात्मजा वसुदेवो इति श्रीमान् विज्ञा संप्रतिष्ठिते बहुनी संधि नावानी रूपाणि सुरेशु गुणकर्मा रूपाणि तन्यं विदुनु जना ये शोभो वृंदा आदेशति गोकुलनंदतये सविदुर्गानि व्यंजमतिरा पुराणे नुपतिपति साधवो देशुगीता अराजकी दक्षिमानानि जिज्ञुदेशु समेधिता जो ये तस्मिन् महाभागपिजसि कुर्वति मनु नारायणी तस्मान् विश्वपादा सुरसा तस्मान्नन्दादितो नारायण गुणीशिया कृतिनुवाविनो गोपस्वमायित युवासो इतात्मानं स्वारिषु गर्गेषु सोग्रं गति नन्दो सिंहितो मीन्यात्मानं प्रमाणसो कालेनावृताल्पेन गोकुले रामकृष्णोदानिभ्यामृतभाषिंगेनाभिहितो तावङ्गकमलादिषु श्रीरश्मिर्जमुदापिकर्मेषु तन्नादयश्रीयोजश्लोकमुग्धविमात्रो तस्मादारुञ्चमुदेशोमुचारुपद्गेशवां नत्वा स्थानपीडितो सोमुखनिरीख्यो वसितार्णं जयतु प्रमोदं प्रमोदं जलहंगना दर्शनीया कुमार लीला बधुषितरवालो गीत पुषै वत्सैतरा समुद्रगोटा वनिरोपेक्षिते उदलिजादे जलिजान्त्या सिंहाविबुद्धं सृजति क्रवा क्रीडा अवतारो सुनिषिदं गद्यानि कर्तुमपि नो जल तज्जनो स्वकामो आदुराशमनुषो वशिरां कालेनाल्पेन राजर्षि रामे कृष्ण गोकुले अभीष्टा जानवी पद्भ्यामि सुक्रमोपुण्यसा तरसो भावान् विश्व शैवा बालकिशोरां वृष्टीनां सखीये जनन्मुदं करेषु गोपारुषिणं वीक्ष्य कामसराफलस्मृतां कीलो तस्मादो भूतु समागमा बच्छान् मुञ्चन् कैदासविश्वविवेक्यासृष्टियं मृदतो देवतं कल्पितैस्ते योगै मर्कान् बोख्यान् विश्वान्ति जीनति भण्डं वीनति द्रव्यलाभेशोकी वशे धातु वशे टोकान् अष्टाग्रज्यो रसति पीठकेषु ओविता अध्यष्टानिर्मिशक्या वनेषु तद्वि दष्टागारे धृतमणिगणादृष्णिदीपं काले गोप्या गोघ्रेषु शुद्ध्याग्रचित्ता एवं दर्शानुसृति कुरुते मेधानि निवष्टौ श्रीयोधियोगेशुविजहस्ते इत्थं श्रीविषयानो श्रीमुखाञ्जलोकिं भारते परिभूतिव्युपराधि मैषत् यकटाक्रियामन्त्य रामज्ञा गोरामयो कृष्णभुजं विघ्नन्ति माते नवेदेन सुघृत्वा करे कृष्णमुपलभ्यो इतैषिनि स्वरामयमन्पतिमुजभासतो कस्मान् मीजं दन्तान् भवान् वकिता भयान् वदन्तिरावगाधीते कुमारान्ति नाम विघ्नासु सर्वाम्यसर्वामित्यर्थिवासनदि
चैताग्निना समीक्षं पेशो में दर्शन जैसे एवं तैसे व्यसनाथ उठो आवान जगन्नाथ व्याटे जमीन एक बालको तारतो दधसे विषम जगत सस्मिता कमुसा विद्या असाधी वाधी भूगोलम मुद्राकिंदु कारकम ज्योति चक्रम जलम तेजो नपस्यो वीर्यच वैकारिकस्य मानसो मात्रा गुणस्या एक दिव्यं सो जीवकाला विवेशाय गंशुनस्तनुर्वा कविरं सात्वसाद किं स्वप्नं धरूपन्ति आमदिवते बरवस्य रोजमुदन्ति कुमारसो आकन्धनो पट्टिको आत्मयोगा अथो जठावन गोचरं तेन दारुकं जिनिषा जलाशयं दीनो ततोप्सीति सूर्योर्व्याभ्यं यथावस्मि तत्पदम् अहमवासो पितरमेव सुश्रुते बेसरा खिलपाद्यौषधि गोपेषु प्यासमदेजानीव कुमुदिं सोमेकति इदमिदमात्मानुपयां तरिसरो ईश्वरां गीतान्मात्रां पुत्रस्यामिं विभुं सज्जो न सरस्वतीगाभो सरसानामृतं प्रविद्धि काले प्रवृत्ति जरापुरा तया च ज्ञानविसञ्जाते सात्वी उपज्ञावान्वस्तुभ्यां हरिं समन्यतारकं श्रीराजवासनन्दो किमखलुभूतसेयो ये पद्मं दशोरा महाभागं पपू जयेशो स्तनं हरि पितरुणानन्देशां दशानुदिव्याङ्कान्ति ज्ञाने कृष्णयो दल्लोकमनापं श्रीवासो द्रोणवसुनां प्रबलोद्रुजसो पर्याकृष्यमान् आदेशान् ब्रह्मशेषान् जाठयानो आदेवो महादेवी भूरि विशेषरूपी भक्ति स्यात् परमालोकी प्रञ्जातुषु शुद्धि भवेत् ततो भक्तिर्भगवती पुत्री यतो जनार्दन दम्पयतामनुसंवाद गोपीषु भारत कृष्णे ब्रह्मणे आदेशं सत्यं कर्तुं विजयी विभु सा रामो वसन्तचक्रे तेषां प्रीतं स्वलीलया इति संवादमाप्राणपरिवयासिक्यां दशमस्कन्धे विश्वरूपदर्शन नामो अष्टमध्यायः दारौ कृष्णानंद हरि बोल हरि बोल। वासुवानमध्यासुवासो एकदाग्रदासु यशोदानन्दगीन्य कामस्तादिषु निवटम्बो स्वयंदि जानि गीतानि तन्वानि हृदयमन्थने काले स्मरन्ति चरणितो क्षौमं वा संस्कृति विपति पुत्रस्नेहते दारमधुसुतो रञ्जार्कालोकरम्भौ कुञ्जलेषु विसंसृति कबरी समार्थिनिमन्थने तां स्तनिकामो आसद्यो मन्थति जर्णिगीप्रातिमन्थनं वेदप्रीमाभम् तमस्कारारोप्यस्तनं स्नेहमुचिरं विस्मृतिमुखम् आतिथ्यं परजीवेनो चावर्षि समाने प्रेषितरधिरे सञ्जारको सुरसिंहते तद्विभाजनं भीत्वा वृषालवृषावरो जगानो हैम्यङ्गामन्त्रं गतो उताज गोपीशून्यतं पयो पुनो प्रविशदीशदयमितं भग्नं सिंहशूटमेषु वाजा तद्रावनोर्यविशुरो उलखलाङ्गेरुपरिवेशं मार्कायो दण्डने शुचिमिषं हयङ्गमसजाविदीकृतं वयसज्जात् तवासमध्यने तमापततिं समाविशदरमासाद्यवितवत् गोप्यानुधावतो योगिनां किं प्रविष्टुं राजमन अनक्षमानादनीरोचराजगति स्मज्यमाद्यवीनो विशंसमेर्बध्याचुष्णानिव्योपफलसमात् कृतागसन्तं दुरन्तमार्गितं विकागवसानित्यं प्रेषणा उदिशानं वैविवलं यज्ञभक्तिर्भजसनात् त्यक्त्वा जस्मिंविशेषं विज्ञाकर्षयेया ईरेयो तं बन्धुस्नायावधिकामेनो सातन बहिरन्नापि चापनं पूर्वापरं बहिरन्तिवां सफल्या तं महात्मं वज्रगमर्तालिङ्गवृगजं गोपिकालुखले दाम्ना बन्धो प्रागितं यथा तद्दामो बध्यमानसु सुकर्मो कृतगामसो डाङ्गुलस्तनीतिनो तङ्गुस्ते अन्यसु गोपिका जरासेन्द्रपि न्यूनं तेनापि सनिधेत्रापि त्रापि लङ्गलं न्यूनं जरावतुर्वचनम् एवं स्वज्ञाज्ञानि च स्वदाजनार्पिबुधिनां कुर्वाटिना स्मरन्ति विश्रुताभट् स्वमातु सिनकत्राज विश्रम्भकवयस्य दृष्ट्वा परिश्रमं कृत्वा परितासि वन्दने एवं सनिताव्यङ्ग्याधिना बुधवासना विधिनापि कृष्णोदिषेदं शेषरं बसे नेमं विरिञ्चो नीडवाठो जलपङ्ग्यादिप्रसादं देविरे गोपी जट्टत्प्रत्यो समो
विमुक्तिदात नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिकासुत ज्ञानिना पंचभूतानां तथा भक्ति मतामिह कृष्णस्तु गृहे कृतेषु व्यग्रायां मातरि प्रभो अद्राखित अर्जुनौ पूर्वं गुजकौ धनतात्मजौ पुरा नारदशापेनो वृक्षतां प्रापितौ मदा नलकुबेरमणिग्रीवा बीते ख्यातौ स्यन्यतौ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे गोपीप्रसादो नामो नवमोऽध्यायो श्रीमद्राधा गोविन्द कृष्ण प्रचानंद बल हरि बोल हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशमध्यायो श्रीराजुवाच कच्छतां भगवान् नेतयो शापैशो कारणं च तद्विगरितं कर्मो जेनो वा देवर्षेष्टमशुवासु दुर्दैस्या अनुसरो भूतासु दितौ धनलात्मजो कैलासु पवने रम्ये मन्दारकिन्यां मरुत्कटो वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाद्घूर्णीतो लोचनौ श्रीजनैरगायद्विलसेतु पुष्पिते वने अन्तो प्रविशु गङ्गायाम् अम्बुजद्वनराजियुतिक्रीडभिर्भटीभिर्गजामायुवकरेणुभिः दृश्याचो देवर्षि भवान् सत्तो कौरवो पैशासादो देवौ खीवानौ संविध्यत तं दृष्ट्वा द्विरादेव्या विवसा सापसंगिता पासाङ्गे शबरिशिवं विवृतौ नैविकुचकौ तौ देशौ मदिरामितौ मदान्धौ सुरात्मजौ तयोरनुग्रहार्था शापं दैशन्निति जगौ सुनारुवासौ नैजसेजुतो देश्यान् बुद्धिभ्रंशोरजो गुणौ तमोरदाधिभ्यो स्त्रीद्यूत वशासवः हन्यन्ते पशो दत्तो निर्जरैरजैतात्मभिमन्यैरानिमिषङ्हेमदेहमदारामृतुनश्वरं देवसंज्ञापितसा क्रीमीरवीरभस्मसङ्गीतं दितश्रुततो स्वार्थं किं वेदो निरोधतः देहो किमन्नरातु संनिषेतुर्मातुरेवसु मातुर्पितुर्वामलिनो पितुराग्नेशुनोऽपि वा एवं साधारणं देहम् अव्यक्ता अप्रव्यप्यं को विद्वान् पाठेतन् हन्ति जन्तुनीते असत असतो श्रीमदान्धैषो परिद्रं परमञ्जयन् आत्मोपमेनो भूतानि दरिद्रो अपरमीक्षते कथाकनुके विद्वांसो दण्डोरि निषेधख्यं जीवसामङ्गते लिङ्गै तथा ते अभिकण्टक दरिद्रो निरहं शत्रो मुक्तो सर्वअद्ययिनो कृशादृशयाप्नोति तद्धीतैषो परं तपः नित्यं सुभ्याम्रोषु दरिद्रस्य नान्यबोधमे इन्द्रियाण्यानुशंसति हिंसापि विनिवर्तते दरिद्रस्यैव युज्यन्ते सारवसंवेदशनो साक्षी क्षीणोति तं वर्षो ततो आरब्धि शुध्यति साधूनां समचितानां मुकुन्दचरणीनां उपेक्षे किं वादनस्तारैरद्वीरासुतोषयि तरहं मर्त्योर्ना वारुण्यामृदण्डयो तमोदङ्गेशामि सैन्या जीतात्मनो जरिमौ लोकपालेषु पुत्रो भूतातं प्लुतौ स्वनिवासारं निर्बीजानतो सुदुर्मतौ ततो अरतो स्थापरतां स्यातां नैव यथा पुनस्मिति दृश्यानुराणेन तत्राविमद्रुगृहात् वासुदेवेशो सन्निध्यं लब्धा दिव्या सरस्वते बीतेषु लोकरां भूतो लब्धा भक्ति भविष्यति शिशुवासी मुतातो देवर्षि नारायणाश्रम नलकूपमणिग्रीवा वासतुर्जा गमलार्जुनौ ऋषेर्भावानात्मुख्यैषु शैत्यं कर्तुं वसु हरिजगामो शनकै तत्रो दत्तस्तां गमलार्जुनौ देवर्षि मे प्रीतमो जरामो धनरात्मजो तत्सराशयिष्यामि तद्गीतं तन्महात्मना
इत्यतनरेण अर्जुनयो कृष्णसुजमलार्जुनो आत्मनिर्वेशमात्रेण तिर्जङ्गतमाल्को बालिनो निष्कर्षयो तालूगनं तद्दामोदरेण तरसत् कलिताङ्घ्रिबद्धौ निष्पेततो परमविक्रमातीथैवेस्करा प्रवादपीठपो क्रीडचन्दशब्दौ तत्र श्रिया परमया खगुवो स्फुरन्तौ सिद्धावोप्यभ्युकुयोरिभुजातवेदा कृष्णं प्रणम्य शिरसानुखिलनाथं बद्धञ्जलिग्रजामुचतु स्म कृष्णकृष्णो आजोगिन् समज्यो पुरुषो परः व्यक्तामिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः तमेव सर्वभूतानां देहस्वामिन्द्रियस्वरूपं तमेव कालो भगवान् विष्णुरुद्रदेव ईश्वरः त्वं मां प्रकृतिं सूक्ष्मान् रजो सत्त्व तमोमयि तमेव पुरुषाद्यैक्य सर्वते क्षेत्रविकारवे गृह्यमानैस्तमाग्राहो विकारैः प्रकृतिर्गुणैः कोऽस्मिहार्दे विज्ञातुं प्राक्सिद्धं गुणसंवृतः तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय आत्मज्ञा गुणसन्मनीषे ब्रह्मणे नमः देशावताराज्ञान्ति सर्वस्येऽपि शरीरेण तेस्तै तुल्यादिमद्यै दिक्नसङ्गतै सोवान् सुलोकेशो भवान् विवासो अवतीर्णो हि वांसेनो सम्प्रतं पतिराशिषः नमो परमकल्याणो नमो परममङ्गल वासुदेवाय सन्ताय ददूनां पतये नमः अनुजानी नौ भूमं सदानुदीर्घस्वरूपदर्शनं तो भगवतो ऋषेराशीर्वादनुग्रहात् वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां रसोकर्मसु धर्म मनस्तवोपार्योरण स्मितां शिरस्तवो निवासा जगत्पति दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां शिशुवासो इत्थं संकीर्तनः सभ्यां भावान् गोकुलेश्वर दाम्ना साधुकुले बद्धो प्रसाने गुप्यकौ शिवन्वासौ जातमो पुरीर्वैतदृशीना करुणात्मना जश्रीमदण्डायोर्भाग्यभिभ्रंशो अनुग्रहो कृतः साधूनां संहितानां सुतरां कृतात्मनां दर्शनात् भवेद्बद्धो पुंसोख्यो सवितुर्विदे तस्य घटं मत्परमो नलकूपनं सदातो मयि भावो वामिषितो परमो भवः शिशुवासो इत्युक्तो परिक्रम्यो प्रणम्योऽसो पुनः पुनः बद्धो उलूखलामामन्त्रा जगजगतु दिशामुत्रमा इति श्रीमन्भागवतमहापुराणपरवैयासिक्यां दशमस्कन्धे नाटशापो नामो दशमध्यायो श्रीमद्राधागुण कृष्णप्रदानन्द बल हरि बोल हरि एकादशाध्याय शिशुवाच गोप्यानन्दादयो श्रुत्वा द्रुमयोः परितो शिवं तत्र जग्नो कुरुश्रेष्ठो निर्घाट भयसन्दिता भूम्यां निवृत्तौ तत्रोद्गतेषु जमलार्जुनौ बभ्रुर्मुषद्विगालख्यं पतन्त्यानकारणम् उलुखलं विकृसन्तं दाम्ना बद्धञ्च बालकं कैसेदं कूटो आसर्जमुत्पातो इति गात्रः बाला ऊषूरनेति तिर्जघट उलुखलं विकर्षता मध्यमेनो पुरुषाव्यपचक्महि नोटेतरुतं जगदीर्भूर्न घटतेति स्यात् तेषु तद्बालेश्वरवातनं तर्जो केचित् सन्धि धचेतस उलुखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं स आत्मसंविलोकिनन्दो प्रसन्नरो विमुषोः गोपीभिः भीतो अन्यतात् भगवान् बालवत् बलवत्कसु उद्घातो गसन् मुग्धस्तेषो दारुदन्त्रवत् बिभर्ति कलिलात्मानो पीठकोशान् पादुकान् बाहुक्षेपञ्चो कुरुते स्थानाञ्चो प्रीतिमाभं दर्शयां सद्विदां लोको आत्मनो भृत्य वंशतां वृषबाहो ये हर्षं भगवान् बालचेष्टितै
तेनी वो फलानी छूटा समृत जो फलार्थी मन्यमादान ददौ सर्वो फलप्रदः फलविग्रहिणी तैषो चूटकान्यवकरद्वयं फलैरभूदादै फलकाण्डादभूरिव सरितीरगतं कृष्णो भाग्नार्जुनो मठाहो यद्रवाञ्चस्वती विक्रीडन्तं बलकैर्भुजम् नोपायतां जरा भीमो जराहूतौ क्रीडाङ्गेन पुत्रको जरोषां प्रियामास रोहिणी पुत्रवत्सलां क्रीडन्तं सा सूतं बलै रतिं बीलं साग्रजं जशोदा अग्रजो हि विकृष्णं पुत्रस्नेहतस्तनि कृष्णकृष्णा अरविन्दख्यो तातोयि हि स्तनं पिबो अलं विहारे क्षुत्पे क्षान्ता क्रीडान्तो असि पुत्रकः हे रामागत्सु तटाजु सानुजो कुनन्दनो प्रदया प्रातरेवो कृताहार सर्ववान् भुक्तुमर्हसि प्रतिक्षते त्वां दशर्हो भोजमान बृहाधिपो यज्ञावयो प्रियङ्के हि शोभ्यान् बातो बालका धूलिदूषणविहाङ्गं पुत्रो मज्जनमाभो धर्मख्यं चेतु भवति विप्रेभ्योति हि गाङ्गसुति पशुवैशो वैशास्ते मातृमृषाठो स्वलङ्कृता तञ्चो स्नातो कृताहारो वीरस्यो स्वलङ्कृत इत्थं च स्वरातमसो शेखरं मत्वा सूतं स्नेहान्निवृद्धधिर्निप हस्ते गृहीत्वा स रामच्युतं नीत्वा शोभस्तिं कृतवत्या कूर्यम् गोपविद्यामो शापाटान्ननुसूयो वृद्बनिनन्दादयो समागम्यो ब्रजकर्जः मन्त्रम् तत्र उपनन्दामाहो गोपो ज्ञानयोरिगो देशकालाति विज्ञप्तो प्रियक्रीडां कृष्ण उठाट तद्यमीतो अस्माभिर्गोकुलेषु हिते जीवि आयाततो मोर्पाटाबालानां नाशहेतवे मुक्तो कथञ्च बालज्ञा बालको गिरि हरेरनु अनुग्रहायो नूनं सविन्ननापतत् चक्रवातेन नीतो यङ्गैकेन विपितं वीरशीलायां प्रतिशत्रो परित्राटो सुरेश्वरी जन्मम्रियतो ध्रुवयतायोक्तो दन्तरं प्राप्यो बालको आशावटव्यवापि तद्दैप्यच्युतोदयकिसं जावतोपरिको रैज्येष्ठो व्रजं नाभिवेदितो तावद्बालानुपादायो जैषामो अन्यत्र शानुका वनवृन्दावनं नाम वसव्यं नवकारणं गोपीभीरिसभ्यं पुण्याद्रि बीजरूषणम् तत्र सेवुदेश्याम सकटान् भुङ्क्ते मासिरं गोदनन्या घृतो जान्तु भवतां यदि रोचते तत्सुद्धै कथितो गोप साधु सर्व शब्दीतिवादिनो व्रजान् स्वान् स्वान् समारुह्य ततो स्वरूढः परिष्ठता वृद्धान् बालान् श्रियोराजन् सर्वपापकारिणि अनो सौरभ्यो गोपाला जतो आदशासनं गोधनानि महापुरस्कृतो संज्ञाकुर्यानि सप्तो ज्योतिघेनो मातादयो स पुरोहितैः गोप्यो रूढधियो नूत्नो कुङ्कुमकानिलकृशैलाञ्जौवृता निष्कण्ठो सुवासस तैषा दशोरारोहिण्यावेकं सकटामाश्रिते रेजतु कृष्णमारभ्यां सकटा सगुणसुखे वृन्दावनं सम्प्रदिशो सर्वकाल शोभं तत्रो चक्रुर्ब्रजवासानां सकटैरन्दचन्द्रवत् वृन्दावनं गोवर्धनं गौनापुलिमाधितो विख्यात्यासीत्युत्मा प्रीतौ राम नाथयोर्नृपः एवं ब्रजवशां प्रीतिमत्सको बालशशिते कलवक्यै सुकानेन पशुपालो भूवतु अभिदूरे ब्रजवपु सो गोप बालिस्मृति सारणं नानाक्रीडा परिषदौ कस्य द्वारे बेनुं खुनन्ति कीपतो कस्य पारे कस्य नीभे कस्य कृति मगोरवे विषावानौ नन्दसुजुधाते परस्परम् अनुकृत्यो रूटे जग्नुर्जेर्तु प्रागिर्यथा कदाचित् जमुनातीरे वत्ससारस्वतुके विषय कृष्ण लयोर्जीव खांसु दैत्य आगमत् तं वत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्समुखो गतं हरि दर्शयन् बलदेवायो निर्मुग्धो तादृश गृहत्वात् रवपादाभ्यां सोल्लाङ्गुलमच्युतं भ्रामयिता कटिसाग्रे शैलोग्रातसीवितं सोऽपिकथै महाकारोपचानानैव पाठः तं विखो विस्मृता बाला संसु साधु सब्जी देवासु परिसन्तुष्टा भूभू पुष्पवर्षिण तौ वशपालकौ भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ स
सम्प्रातरासो गोवत्सा चार्यन्तु विधीरतु सं सं वशुक्लं सर्वं पायित्वा एकदा गत्वा जलाशयाभ्यागं पायित्वा वपुर्जलं चेतुर्दतिषु महासत्त्व परिवेशितं तत्र शूराबलिर्भुरं गीरे सिंहमीवोचितं सो वै बको नाम महाशूर्णयो बकरूपधि आगता ससाक्षं तीक्ष्णकुञ्जीवासी कृष्णं महाबककृष्णं दृष्ट्वा रामादयो अर्वका भूभूरिन्द्रियादीनां प्राणाः विषीदश तं तालुमूलं प्रदहष्टमग्नि दृगोपालसूनुं पितरं जगद्गुरो तत्सर्त सज्जो अतीतराख्यातं भगवतुण्डेनो हन्तुं पुनरव्यपद्यत तमापततं शून्यविद्धो तुण्डयोर्द्वभ्यामकं कंसशकं शताङ्गति पश्यत्सु बालेषु दरारो लीलया मुदा बहु वीर्णा दद्धौ दिवुकुशां तथावकारिणीषु लोकवासनसमाकीर्णन्दमल्लिकादिभिः समीरे मे चाणकानुजैर्विख्यो सातुलता बीजस्मिरे मोक्तमवकासुरज्जासु बालका रमादय प्राणविवेन्द्रियो गणः स्थानायतं तं परिदेभ्यो निर्वृताग्निनवत्सान् व्रजमेतु तज्जगौ छूटा त्वद्विश्वाभीता गोपभ्यासीयादिता प्रत्यागतामौ संशोक्या दक्षिणसुतु शीतेक्षणा अहो बटख्यो बालेषु बभू मृत्युरव्ययम् अप्यासीद्विग्रहं तेषां कृतं पूर्वं वटुभयम् अथ प्यातीनः सन्तेनो नैयूते घोरदर्शनां जिघांसैनुसज्यो नैशून्यासु पतङ्गवत् अहो ब्रह्मविदाम्बासु नाशत्यासनिकरिति गर्गोदराहो भवान्नन्दभीतरितत् इति नन्दादयो गोप्या कृष्णरामकथां मुदा कुर्वन्तो रमन्मानासु नाविन्दन् भवति धनम् इमं विहारे कौमारो जगदुर्बुधे नीलारण्ये सेतुबन्धेर्कशत्वप्रदादिभिः इति श्रीमद्भागवतमापुनः दशमस्कन्धे वत्स बको वधो नामैकादशोऽध्याय श्रीमद्राधागोविन्दकृष्णप्रीतानन्द बल हरि बोल हरि बोल। द्वादशाध्याय शिशुवासु कचित् बनायो मनोदरहट्जातो अपराधो समुत्थाय विश्वपान् प्रबोधयन् सिंहवीनुसारुणा विजयता वत्सपूरो हरि तेन वसाकं पीठुका सस्रशो स्निग्धा सुशीद्विघ्नविमानपिनीन स्वान् स्वान् सस्रशो परिसङ्ख्यायोन्विता वत्सान् पूजन्तो विजयनिर्मुदा कृष्णवत्सै सयसंख्यातीर्थकेषु स्वकंसकान् चारयन्तु अर्थलीलाभिस्फुटो तत्रो तत्रः फलप्रवाहस्तगप्रवालस्तगसुमनपि सुधातुः कञ्चनाति मणिगुणभूषिता अपिभूषणं मुञ्चन्तो अनन्यासिक्यादीन् जातान् नरासु शिखिपु तत्र चादु पुनर्दुरासन्तो पुनर्ददु दरिदूरङ्गता कृष्णो वनसो भेखिनासु अहं पुरमिति संश्लेषोरे मिरे केचिद्वेनुन् वादयन्तु धन्तं सिंहानि केशवकस्य सिंहे प्रगायन्तु कूजन्तु कुकुलिपरे विषाति व्रादन्तो वसन्तसाधु संसकै बकैरूपासु चतु निपतन्तु कलापिभिः विकसन्तु केशवान् आरोपन्तु तैजुमान् प्रवन्तद्यैते साकं प्लवन्तु पदादिषु साकं देवी बलय खिलै शरीर प्लशोप्लव संप्लवै बीजन्तु प्रतिशामो पाशगत्यो प्रतिश्राम इत्थं सदां ब्रह्मसुखानुभैत्यादायसंवटानि परिदैवतेनो मायाशिराणां नरकै नरदारकेनो साकं विजरुः कीतपुण्यपुष्पा कीतपुञ्जा जलपानपांशु बहुजन्मकृशतो हठाजापीयतो हिमा सोयेवो तद्दिशिदिशयो संस्कृतो किं वर्णते दस्मितो व्रजोकसाम् अथा घनामपारोप्य सन्मिहो रोषदां मध्ये सुखसीनाक्रियन्विखो निक्षमानिक्षमो नितं जरस्तनिशम्येषु विपीतां नितमितार्पदिख्यते
दस्वर्वर्णन कृष्ण मुख्यान स्वरूपो कंसानुसर शिष्टा शोभकी बकानुसर अयंत में सोदरनाशकृत तयोर्द्वारो मीनं घवना सबलं हनिष्य इति सरामर छोटादि शिलापुचंद्रतान सभावृषा प्राणे गते बसुजो कानुचिता प्रजासभो प्राणभृतो हि देते इति व्यवसा जागरण बिल्बपु भोजना योजनायां महाद्वीपीवरं धृत्वाद्भूतं व्यतगवानन्तरापथि व्यसीतो प्रशया खलः धराधरस्थो दलदो तरिस्थो दर्जानन्तो गिरिसिंहदरिष्टा ध्वन्तन्तरायसे विरत धीवो पुरुषा नीलव्यस्ते वीक्षणम् दशाटं सर्वा मत्वा वृन्ना वनस्यां व्यटानो द्वन्द्वेनो दिन्देनो स्मलीलया अहो मित्राणि गतितो षट्कुण्डं पुरोचितम् अस्मत् सङ्ग्रासनव्यप्तो व्यालचुण्डायति न वा शैचमर्गोकारक्य मुतरामनुतद्धजम् अधरामनुवादोत्र स्तत्पति सायानुकारम् परिसंप्रदेशोदयं शिरवारो नवोदरे भृङ्गसिंहायोपेता दंशाभिविच्य पैसत ऐसे स्वारामनां मार्गोऽयं वसनां प्रतिगच्छति येवानन्तर्गति घण्टामपेदत् दन्तकानराणं दावोष्ण खरवाटोऽयं श्वासद्भाति विशितो तद्गन्धा स्वरूपा गन्धो जायन्त्यामि अस्मान् सुमित्रवशितो निवेशन्ययो तथा ते भगवद्विज्ञा वैख्यति जनादनेति वाक्यामूर्सन्मुखं पीठो असन्तो करतारन्ययुत ईठं मीठो अत्याजम् अजाति सूता विशुन्त्यो अचरं विषायते नैखेद्वित्वाखिलपूर्वत् स्वानाङ्गयुद्धं भगवान् मनोदधे तावद्विष्टातान् दूरं परं नो प्रीणिशिशवो सवस्सा प्रत्यक्षमावेनो बका बकारी शनेनो हठास्वक् तन्तस्मरेणो रेखसा तान् विखो कृष्ण कलग्राक्षमन्यमानो कर्णान् अम्बुकरारपच्युतान् दीनांशो मृतो दशराज्ञा विपालयुजस्तिकेनो विस्मिता कृतं संयुक्ताश्वखलानां जीवनं मोवा अमिषाञ्चो सतां विहिंसनम् द्वयं कथं दशामि समिचिन्तो धावतुण्डवशेषा द्वीप तदा गणसरादिव्या भयासादिति चुकृषु दहिर्जुग्रो कंसज्या क्यौनपाच्या गवान्नवा तत्सुता भगवान् कृष्णम् अस्तभ्यो भवत्सदाशूर्णि विजेति स्वात्मानं तरसा बभ्रिजे गले तटुटिकाय सुमिर्धामान् निर्दिष्टितो मतिन्दतुतस्तथा पूर्णोऽन्तरङ्गो पवनो निरुद्धो मूर्धन् विनिष्प्राप्य विनिर्गता वहिते नैव शब्दो विनिर्गते प्राणस्य वर्षान् विविधो परिता दृशा समारथ्यायो तनिग्रह पुनरुता मुकुन्दो भावान् विनिजो पिनायितो गोठित तमुद्भूतमे ज्योति सराम्ना दर्शयिषो प्रतीख्यो के अवशितामेनो विनिर्गतो विशो तस्मिन् निषदां योगसाम् तत्वती हीरा पृष्ठो दीर्घार्थं पुष्पे सुराप्सरो विनर्सने गीते शोभादाशिखरा बालके विपृशयन्तीनि शनैर्गणाः तद्भूता सुरवासु गीतकाजनयादीनैको शवं मङ्गलस्वनां श्रुत्वा सदाम्नो तजो आगते तीराद्मयिषु जगाम विस्मय राजन्नाचरन् शर्म शुष्कं वृन्ना वनेद्भुतं मृगसां बहुतिक्षं बहुक्रीडा सुगयहम् एतर्कौमार्जं कर्मो हरेरात्मा विमोचनं मृते पवण्डकी बाला दृष्टोद्विस्मितो प्रव्यते नैतद्विस्मितं मुनुजार्वामि यो परापराणां परेषु वीरश अगोपी जलस्पर्श धौतपाटकप्राप्या प्रप्ता संयमसुदुर्लभं सकृत् संगप्रतिमावान्तर्हिता मनोमयी भावतीं जलुगतिं सो एव नित्यात्मसुखानुभूतिः व्यूढमार्य अन्तर्गता हि किं पुनः श्रुतोवाच इत्थं
दीजाजावधुरभ्यसिद्धुराजतनुविचित्रं प्रोप्रसूटियोऽपि तदेव पुण्यं वयासकीये सन्निगृहीतचेतसा राजोवासो ब्रह्मन् कालान्तरुतत्कालीनं कथा भवेत् जत्कौमारे हरिकृतं जगु पौगण्डे अर्वकाः तद्रुविमे महायोगिन् परं कौतूहलं परो नूनमेतत् परेदेव मायाभूतिनन्यथा वयं ध्यानितमालोक्य गुरोऽपि क्षत्रबन्धवो जलप्रयुमो मुहुर्मुहुः पुण्यं कृष्णकथामृतं श्रुतुवाच एतस्मप्यसोतु बालयान्यसद्धारिण्या सन्तु धीर्यखिलेन्द्रियो कृस्रात्कूलबद्धहीनो ऋषि प्रत्याहुतं भागवतो तमा इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे पारमिकवैयासिक्यां दशमस्कन्धे द्वादशोऽध्याय श्रीमद्राधावनुकृष्णप्रतानन्द बल हरि बोलो Sri Krishna